नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसी कंपनीज डेटा के पहाड़ को स्मार्ट डिसीजंस में कैसे बदलती है? और हाउ द कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स नो एग्जैक्टली व्हाट यू विल वॉच नेक्स्ट, और हाउ द अमेजोन रिकमेंड्स द प्रोडक्ट दैट यू एक्चुअली लाइक? That is the magic of the data analyst. Hi everyone, I am Sakshi and welcome to my channel. If you are confused about how to start a career as a data analyst, what skills you need, which tools to learn, and how to get your first job, then you are at the right place. In this video, I will share a complete roadmap from beginner to job ready data analyst step by step. So, stay tuned till the end. Let's start with the basics. What does the data analyst actually do? A data analyst collects the data, cleans it, and turns it into the insights that help the businesses to make the better decisions. Let's consider one example. Imagine you are working at Swiggy and you might analyze which food sells most on the weekends, which food sells most on the weekdays, or which city orders more desserts. Like this, so basically, you turn the raw numbers into stories that guide the business strategies. So throughout this, it helps to understand what exactly customer wants, how everything works, how the sales are going, where to improve, how to increase revenue to decide the new strategies. Now let's talk about the skills that you need to become a data analyst. I have divided them into the three parts. And the first part of is core skills. In that, first comes SQL, which is structured query language. SQL is a undisputed language of the data, and without that you can't be a data analyst. The SQL is what you use to communicate with the databases. It simply means that it is a language if you want to communicate with the databases. So, in between weeks 1 and 2, you have to completely focus on the basics of the SQL. In that, you have to learn about the core commands of SQL like select, from, where, order by, etc. Now, in the short, I will explain what these commands actually are. Okay, so select, ये एक डेटा मांगने का तरीका है. These all these commands are एक ये एक डेटा मांगने का तरीका है. Select से कॉलम चुन सकते हो, फ्रॉम से टेबल पे लगाओ, वेयर से फिल्टर लगाओ. जैसे कि सिर्फ मुझे मुंबई के कस्टमर्स चाहिए, सिर्फ मुझे पुणे के कस्टमर्स चाहिए, लाइक दिस. ओके, और ऑर्डर बाय से सॉर्टिंग करो. इफ यू वांट इट इन असेंडिंग ऑर्डर, देन यूज असेंडिंग. इफ यू वांट इन डिसेंडिंग, you can use it simply. Let's take one example. Okay, imagine you have a database of giant library. Okay, and you select the books title, so it will be a column. Okay, books title, it will be a column. From, where, shelf, so it will be a table. Okay, and where, the genre, where is the genre to filter according to that genre. And order by author's name, like sorting to sort the author names. Okay, done. Now we will move on to the week 3 and week 5. Week 3, 5, it is a intermediate week. So in that you have to learn everything about the joins. You have to master the joins. Without joins there is nothing in the SQL. Okay, so what is the joins? Joins are used to combine data from two or more different tables. ये ज़्यादा इंग्लिश हो गया. अब हिंदी में बताती हूँ. ओके, सो जॉइंस क्या है? दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को जोड़ने के लिए होता है. ओके, जैसे कि लेट्स कंसीडर देयर इज कस्टमर नेम्स लिस्ट. ओके, और उनके ऑर्डर हिस्ट्री है, उससे मैच करना है, तो वी विल यूज द जॉइन हियर. ओके, yes. Next is some aggregate functions. Okay, so group by command is there,
essential aggregate functions like count, sum, average for the basic data summarization. So ये एक डेटा का समरी निकालने के लिए यूज होता है। ग्रुप बाय एक जैसा डेटा में जमा करता है, जैसे कि हर सिटी की सेल्स है, फिर आप उसको काउंट कर सकते हो, सम कर सकते हो, कितना सेल हुआ है, उसका एवरेज निकाल सकते हो। ओके, so basically joins is to how you combine the information from the multiple related tables, and other functions aggregate essential aggregate functions are to summarize the data. Okay, understood? Okay, now week 6 to 8, it will be totally advanced. In that, you have to learn complex query techniques. Okay, learn some window functions like row number, rank, and some common table expressions, CTEs. CTEs are crucial for making your complex queries clean, simple, and maintainable, which is a major plus in interviews. Okay, understand? So, ये मैंने जो बोला विंडो फंक्शंस, रो नंबर है, रैंक है, ये एक टेबल की रोज पर कैलकुलेशंस करते हैं। रैंकिंग रैंकिंग करने के लिए बेस्ट है, मतलब किसको फर्स्ट रैंक देना है, किसको सेकंड देना है, किसको थर्ड देना है, बेस्ड ऑन देयर सेल्स फिगर। एम्प्लॉयज का रैंक देना है अकॉर्डिंग टू देयर सेल्स फिगर। जिसने ज्यादा सेल किया उसको फर्स्ट रैंक मिलेगा भाई, जिसने कम किया उसको लास्ट रैंक मिलेगा भाई, सिंपली। ओके, and CTs are common table expressions, that is temporary named result set, so that you can reuse within a single query. In simple language I will tell you, CT is एक टेम्पररी नाम दिया हुआ डेटा सेट है। ओके, जिससे आप एक ही क्वेरी में दोबारा यूज कर सकते हो। इसे मुश्किल क्वेरी को आसान स्टेप्स में तोड़ना आसान हो जाता है। ओके, yes. So that is about SQL. Is many more about the SQL. There are many good level tutorials are available on the YouTube. I will attach the link in the descriptions that I think that are the better for learning the SQL. Okay. So let's move on to the next skill, which is Excel. Yeah. After listening Excel, you might think that you know Excel. Yes, but an analyst uses it as a powerhouse tool. Okay, so you have to master in the Excel also. So in the weeks 1 to 2, you have to learn about pivot tables. Okay, how to use that, for what purpose they are used, like that. They are the single most powerful way to quickly analyze and summarize your complex data sets to create executive ready reports. पाइवट टेबल जल्दी से डेटा को समराइज और एनालाइज करने के लिए है। आप फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आसानी से डेटा दिखाने का तरीका बदल सकते हैं। ओके, एंड इट इज रिक्वायर्ड, मीन्स आना ही चाहिए ये। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक इफ you have to switching from total sales by months to total sales by the product category, is easier. It is the working of pivot tables. Okay, so keep in mind that pivot tables are used for the quick summarization and analysis. Okay, so during week 3 to 4, you have to master in the formulas. Okay, there are many formulas in the Excel that will help, or that makes the our work easier. Okay, so go beyond the basics, बेसिक्स से आगे बढ़ो। फॉर्मूलाज आपके डेटा को डायनामिक बनाने का तरीका है। एक ही काम है, वो रिपीट टास्क करते 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 कभी नहीं होगा। सिंपली एक्सेल में फॉर्मूलाज अवेलेबल है, पुट दैट फॉर्मूलाज ऑन द मिलियंस ऑफ सेल्स, योर वर्क इज इजियर, योर वर्क विल बिकम फास्टर। ओके, सो हाथ से जो कैलकुलेट करने की जगह है,
वो आप एक बार फॉर्मूला लिखते हैं और वो ऑटोमेटिकली मिलियंस ऑफ सेल्स पर कैलकुलेट हो जाता है. It is like a little robot. Now all the things are becoming AI. Okay. So it is like a little robot that you put in the cell to do a specific job. It will do. We don't have to do anything. We have to just keep the formula into that cell. Okay. Next, so formulas like sum, average are the basics. Okay. Then master in the VLOOKUP or even better XLOOKUP. Okay. So this formula helps you to pull the data from the another table or another sheet by matching a common value. जो अपने एक्सेल में ज्यादा शीट्स रहते हैं, शीट 1 शीट 2 शीट 3, सो उधर से भी वो कुछ निकालना होगा तो वो हेल्प करेगा. ओके. सो VLOOKUP is the classic and XLOOKUP is the newer, more powerful tool. They are essential for the linking data. For example, matching a product ID from your sales sheet, okay, to get the price sheet means see, uh, you have to match a product ID from your sales sheet, okay, and there is a one price sheet. So to get the correct price, डेटा लिंकिंग के लिए ये दोनों important है. And understand also how to use if else statements, index or match, connect and manipulate the data across the different sheets. So if else statements का क्या है, ये एक डेटा सोचने का तरीका है. लाइक अगर ये कंडीशन सही है तो ये करो, वरना ये करो. कंडीशनल लॉजिक बनाने के लिए ये परफेक्ट है. I will take one example like if sales are above 1000, then you are a high performer. Otherwise, low performer. So there is nothing jhanjat dokya. Okay, there is no jhanjat of how to analyze like he is a high performer or low performer. No, it will do. Just put the loop if else statements. Okay, then again index और match. सो वी लुकअप से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन है. ये दो फंक्शंस को जोड़कर वैल्यू को सर्च करता है और करस्पॉन्डिंग डेटा किसी भी कॉलम से ला भी सकता है. यस. देन ड्यूरिंग द वीक 5 to week 6, work on the visualization part. Visualization charts, there are many charts available. So the goal is to present the insights clearly. हमारा मकसद है ये कि इनसाइट्स को क्लियरली प्रेजेंट करना है, क्योंकि हमको बैकग्राउंड स्टोरी पता है पर सामने को पता नहीं है, तो उनको आसानी से समझना चाहिए. ये इट इज द मोटिव ऑफ एवरीथिंग. सो जस्ट बाय लुकिंग द चार्ट्स और बाय एक्सप्लेनिंग द चार्ट्स द पर्सन कैन इजीली अंडरस्टैंड. ओके, यही हम अपना मकसद है ये सब करने का. So, अपनी कहानी के लिए सही चार्ट चुनना ये भी जरूरी है. तो बार चार्ट किसके लिए यूज करते हैं, तो कंपैरिजन के लिए करते हैं. लाइन चार्ट्स क्या करता है, ट्रेंड्स दिखाने के लिए. पाई चार्ट किसी बड़े हिस्से का पार्ट दिखाने के लिए. ओके. नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ओके, विच इज अ कोर. फर्स्ट SQL, second is Excel. Then the second part is also core part only, where your programming comes. Okay, so here month 3 and 4 are dedicated to acquiring the tools that elevate you to a professional level. So next is Python. You have to learn Python. So when your data is too complex or too large for SQL and Excel, Python steps in. So in the week 1 and week 2, you have to focus on the basics to cover the fundamentals of the language, like variables, loops and functions. Okay, so basic Python वो एक लैंग्वेज है जो सब कुछ ऑटोमेट करती है. ओके, वेरिएबल्स डेटा स्टोर करने के लिए लेबल्ड बॉक्सेस हैं. लूप्स टास्क को रिपीट करते हैं, और फंक्शंस
इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जिसे आप बार बार चला सकते हैं. ओके. यस. नेक्स्ट इज, after covering all the fundamentals of the Python language, move on to the week 3 and week 5, where week 3 to 5, where you have to learn about the libraries, especially about the pandas. Master the pandas library because this will be your primary tool for the data manipulation. Okay, because it allows you to import, clean, transform, and filter the data with the high efficiency. सो पांडास पाइथन में डेटा मैनिपुलेशन का सबसे ज़रूरी टूल है. ये कॉम्प्लेक्स डेटा को आसान डेटा फ्रेम्स में जो बिल्कुल एक्सेल शीट जैसी दिखती है में बदल देता है, ताकि आप डेटा को जल्दी से क्लीन, फिल्टर और ट्रांसफॉर्म कर सके. ओके. यस. नेक्स्ट, आफ्टर कवरिंग द लाइब्रेरीज, move on to the week 6 to 8, where the part is visualization. You have to learn everything about the visualization. Okay. As the in the Excel there are the visualization part where you have to learn about the charts and everything. Here are visualization libraries like you have to learn to use matplotlib, seaborn to create the advanced professional quality charts and data visualizations. So ये एडवांस लाइब्रेरीज है प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी चार्ट्स बनाने के लिए. ओके. ये आपको एक स्टैंडर्ड एक्सेल चार्ट से आगे बढ़कर डीप एनालिसिस के लिए सोफिस्टिकेटेड विजुअल्स बनाने की परमिशन देते हैं. अंडरस्टैंड. यस. सो दिस पार्ट इज ओवर नाउ. मूव ऑन टू द important part. After everything, you have to make the dashboards to present your insights. Okay. So for that, business intelligence tool, BI tool. So your company needs a dynamic interactive dashboards, not the static images. So this is where your BI tool comes in. Okay. So first, clearly understand and pick the one tool and master it. So there are many tools like Power BI is often preferred in the Microsoft ecosystem, and Tableau is widely used across the industries. Okay. So ये बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स जो है, जो डेटा कनेक्ट, क्लीन और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनाने के लिए यूज होते हैं. ये सिर्फ डेटा दिखाते नहीं बल्कि यूजर्स को खुद इंसाइट्स एक्सप्लोर भी करने देते हैं. ओके. सो yes. So after choosing the BI tool, learn how to connect to the various data sources, clean the data within the tool, and design the interactive dashboards that will allow users to explore the insights themselves. इसमें बात है इंटरैक्टिविटी. ओके. सो एक अच्छा डैशबोर्ड यूजर को किसी एक रीजन पर क्लिक करने देता है और स्क्रीन पर हर चार्ट तुरंत अपडेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू वेयर दैट यूजर हैज क्लिक्ड. ओके. यस. And now, in the month 5, you gain the edge that makes you the competitive in the 2026. Okay. So you have to also learn about the statistical fundamentals because statistic is the bedrock of proper data interpretation. Where uh, week 1 to week 2 is descriptive, like understand the basic concepts like mean, median, mode, and standard deviations. This helps you to generate accurate summaries of your data because when you make the charts, you should know about everything statistical concepts. Okay, you have to know it, otherwise there is no meaning to anything. Okay. So सिंपली बता देती हूँ ये कैसा क्या होता है. तो मीन क्या होता है अपना जो सिंपल एवरेज है.
मीडियन क्या है? बिल्कुल बीच की एक वैल्यू है जो पता होनी चाहिए अपने को। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है कि डेटा कितना फैला हुआ है। ओके, देन वीक 2 is over now. Week 3 to week 5 is study the correlation, basic hypothesis testing, A/B testing. These concepts allow you to draw the meaningful, actionable conclusions from your data and move beyond the just summarization. So correlation क्या बताता है? Simply बता देती हूँ ये छोटे छोटे concepts, बाकी तो आपको ही learn करना है। वो भी बता दूंगी किस वीडियो से क्या learn करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी डालूंगी, जरूर देखने ला। सो कोरिलेशंस क्या बताता है कि दो चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई है, क्या उन मतलब उनमें क्या रिलेशन है। इफ वन इंक्रीज, डज द अदर आल्सो इंक्रीज, सो इट विल बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ वन इंक्रीज, other decrease, then it's a negative correlation. Okay, next, hypothesis testing. So this is how you draw the meaningful, actionable conclusions from your data. Okay. On A/B testing is the most common form where you test two versions. Like version A will be the original website and version B will be the new website, to see which one performs the better based on the everything statistical evidence. Okay. Now the important part for the today's world, that is AI collaboration. Yes, I'm saying AI collaboration because now everything is connected with the AI. Connecting in also in the future it will be connected. So an analyst who uses the AI smartly is a 10x analyst. So don't fall behind. Learn to integrate the tools like Gemini and ChatGPT and many more into your workflow. So for example, मैं बता देती हूँ कि SQL generation. We'll take the topic SQL generation. Okay. So use the tools like Gemini to draft the complex SQL queries by giving it a clear prompt. Like act as a senior data analyst and write a query to find the top 5 customers by sales in the quarter one. Second point, quick insights. Okay. So upload that CSV file and ask the AI, analyze this sales data, find the three interesting facts and suggest a visualization. So you can मत, मतलब मुझे क्या कहना है, आपका तो अप्रोच है ही, वो तो कोई नहीं चुरा सकता। पर what AI says, because AI is taking our jobs, right? So what AI has approach like that you have to understand. So use AI smartly, okay? Third, leverage the AI features within your BI tools like Power BI Quick Insights to spot the hidden patterns that you might miss, but AI can not. Okay, so till this, I think, I hope all things are clear. Then, next part, which is also very much important, that is your portfolio. Okay, so in the month 6 is for your turning your skills into a tangible portfolio. You need to create the projects to showcase your ability. So I will suggest that you design the projects in the three parts like basic, intermediate, and advanced capstone. Okay. So project one will be the basic, like use the publicly available data set. You can get it from anywhere from Kaggle, Zomato, any internet data. Many data sets are available on the internet. So and use the Python pandas, matplotlib to clean the data and extract the key insights. Okay. Project 2, take one level upper intermediate. Okay. So take the analysis from the your project 1, that is basic your project, and convert it into a fully interactive dashboard using the Tableau or Power BI, whichever tool you have used chosen.
you can use that, okay? And make sure it is connected in a way that allows you for the dynamic changes. Third project is advanced capstone. It should be a good, better, and best, okay? So combine all your skills, use the SQL to extract the data, Python to handle the complex transformations, and a BI tool for the final visualization. Consider the incorporating a real-time data, fetching a component for a truly standout project. And final step, which is also important, if you can't do this, then no meaning to above all this thing, okay? So upload all your projects to GitHub and ensure that your code is clean and well documented. Build your brand, post about your learning journey and projects on the LinkedIn to attract the recruiters. And if you follow this 6 month roadmap, you will transition from a beginner to a highly capable job ready data analyst, placing you on in the top tier of candidates. So, तो ये हमारे सारे ज़रूरी टूल्स, एसक्यूएल से सही सवाल पूछने से लेकर बीआई डैशबोर्ड से अच्छी कहानी सुनने तक, ये सारे स्किल्स आपको डेटा मास्टर बना देंगे. So if you found this helpful, hit the like button and subscribe. See you next time. Till then, tata bye bye.